विद्यार्थियों नमस्कार। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर। सो वी लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेशन. We studied the three-dimensional structure of ethane and butane. We understand the relative stability of different conformations of ethane and butane, and also we predicted the most stable conformation of ethane and butane with the help of potential energy diagram. So let us start today's lecture and let us see what we are going to discuss in the today's lecture. Dear student, in this video lecture, we are going to cover the following topics. First, the reactions of small ring compounds such as cyclopropane and cyclobutane. Second, Baer strength theory. Third, heat of combustion and relative stabilities of cycloalkanes. And last, the origin of ring strain in cyclopropane and cyclobutane. So let us start our class. So before starting conformation of cycloalkane, let's take a look of some very interesting and important chemical behavior of two smallest cycloalkane, that is cyclopropane and cyclobutane. In general, alicyclic hydrocarbons undergo the same chemical reaction as their open chain analogues. As like open chain alkanes, cycloalkanes also undergo chiefly free radical substitution reactions. And in the same way, alicyclic halides, alcohols, ethers also undergo the reaction we would expect them, like substitution, elimination, oxidation, etc. But two smallest cycloalkane, that is cyclopropane and cyclobutane, shows certain chemical properties that are entirely different from the other member of their family. So what are these different chemical properties? Let us see. Besides the free radical substitution reaction that are the characteristics of cycloalkanes and of alkanes in general, cyclopropane and cyclobutane undergo certain addition reactions which destroy the cyclopropane and cyclobutane ring system and yield open chain product. As you can see in all these reactions, in each of these reactions a carbon-carbon bond is broken and the two atoms of the reagent appear at the end of the propane chain. Cyclobutane does not undergo most of the ring opening reaction of cyclopropane. It is hydrogenated but under more vigorous conditions. But here the remarkable thing is that these cycloalkanes undergo addition at all. So what is the reason behind this unusual behavior? Why it undergo addition reaction? To get answer of this question, let us go to Baer strength theory. So Baer strength theory was proposed by Adolf von Baer in 1885. He was from University of Munich. A part of his theory dealing with the ring opening reaction or ring opening tendencies of some lower or smaller cycloalkane like cyclopropane or cyclobutane, which we have just discussed, is generally accepted today. But the other part of his theory, which has shown to be based on some false assumption and which has later been discarded. So only some part of Baer strength theory is accepted today and some part is not accepted. So let us see Baer. So Baer strength theory suggested that the angle strain of cycloalkanes increases proportionally as the deviation from regular tetrahedron geometry increases. So angle strain would increase on either increasing or decreasing the ring size and hence become unstable.
The next suggestion of bare strength theory is about cyclopentane, which states that the angle of regular pentagon, which is 108 degree, as you can see, are very close to the tetrahedral angle, the well known angle, that is 109.5 degree, and hence the cyclopentane should be virtually free from angle strain. The next statement is the angle of cyclohexane is of regular hexagon, are somewhat larger than tetrahedral angle, and hence there should be a certain amount of strain in cyclohexane, which was later found incorrect. And the last suggestion is the deviation of bond angles from 109.5 degree would become progressively larger and the molecule would become progressively more strained with increase in ring size. This statement is also found incorrect. बेयर स्ट्रेन थ्योरी को हम 4 बिंदुओं में समराइज कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 1, रेगुलर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री से किसी भी प्रकार का डेविएशन. देखिए ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है रेगुलर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री का, जिसमें बॉन्ड एंगल हम सभी जानते हैं 109.5 डिग्री है. तो इस बॉन्ड एंगल से किसी भी प्रकार का डेविएशन बंधों के बीच तनाव उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन. देखिए 109 डिग्री से किसी भी प्रकार का डेविएशन यानी कि बॉन्ड एंगल कम होना या बॉन्ड एंगल अधिक होना, दोनों ही स्थितियों में इस बॉन्ड में तनाव उत्पन्न होगा. पॉइंट नंबर 2, यदि हम साइक्लोएल्केन की बात करें और विशेषकर यदि हम साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन में बॉन्ड एंगल का मान होता है 108 डिग्री और यह मान 109.5 डिग्री के काफी करीब है, जो कि रेगुलर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री का बॉन्ड एंगल है. सो इस दृष्टि से बेयर ने यह अज्यूम किया कि साइक्लोपेंटेन को सबसे कम एंगल स्ट्रेंथ वाला यौगिक होना चाहिए साइक्लोएल्केन्स में, और चूंकि सबसे कम एंगल स्ट्रेंथ होना चाहिए इसलिए साइक्लोपेंटेन को सर्वाधिक स्थायी यौगिक होना चाहिए. पॉइंट नंबर 3, बेयर ने यह अज्यूम किया कि एंगल स्ट्रेंथ रिंग साइज कम होने पर भी बढ़ता है और रिंग साइज बढ़ने पर भी बढ़ता है. दोनों ही स्थितियों में रिंग साइज साइक्लोपेंटेन की तुलना में कम होने पर और रिंग साइज साइक्लोपेंटेन की तुलना में बढ़ने पर. साइक्लोपेंटेन की तुलना में कम होने का अर्थ है हम बात कर रहे हैं साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन की, और ये रिंग साइज बढ़ने की यदि बात करें तो हम बात कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन एंड सो ऑन. सो दोनों ही परिस्थितियों में रिंग साइज के साइक्लोपेंटेन की तुलना में घटने पर या फिर बढ़ने पर रिंग स्ट्रेन का मान बढ़ेगा, और रिंग स्ट्रेन का मान बढ़ने के कारण इन यौगिकों को साइक्लोपेंटेन की तुलना में कम स्थायी होना चाहिए क्योंकि रिंग स्ट्रेन का मान इनमें अधिक है. साइक्लोहेक्सेन में आप ध्यान दीजिए कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है. सो अकॉर्डिंग टू बेयर्स साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोपेंटेन की तुलना में कम स्थायी होना चाहिए. तो इस प्रकार ये 4 बिंदु थे जो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के मुख्य अभिग्रहित थे, और इनमें हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार पहला पार्ट बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी का एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो बाकी हिस्से हैं उसको किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पर किस तरह से हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं. आइए देखते हैं. सो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी की सत्यता की जांच करने से पहले लेट अस गेट द आंसर ऑफ आवर प्रीवियस क्वेश्चन. हैव यू रिमेम्बर व्हाट वाज आवर प्रीवियस क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज why cyclopropane and cyclobutane undergo addition reactions besides the free radical substitution reaction. अर्थात साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अतिरिक्त एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं, जो कि अनयूजुअल है, जिसमें कि साइक्लोप्रोपेन की जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और ये रिंग ओपन हो जाता है. तो ये रिएक्शन क्यों देते हैं, ये अनयूजुअल बिहेवियर है, और इसका आंसर आइए हम बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. So this is ball and stick model of cyclopropane and cyclobutane, and if we examine these structure carefully, we found that the cyclopropane is triangular in a shape and the angle between carbon carbon bond is
of 60 degree, and the ring of cyclobutane is square with 4 angles of 90 degree. So the bond angle in both the cases must be compressed from 109.5 degree to 60 and 90 respectively to fit the geometry of the ring. So these deviation of bond angles from normal tetrahedral value cause the molecule to be strained and hence to be unstable. That is why cyclopropane and cyclobutane undergo ring opening reactions. So because of the deviation of bond angles in cyclopropane is greater than in cyclobutane, as you can see in this structure, cyclopropane is more highly strained and more unstable and more prone to undergo ring opening reaction that is cyclobutane. So after getting the answer of unusual behavior of cyclopropane and cyclobutane, let us see the incorrectness of Beer strength theory. साइक्लोप्रोपेन जिसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है एवं साइक्लोब्यूटेन जिसमें बॉन्ड एंगल का मान 90 डिग्री है, यदि हम टेट्राहेड्रल जियोमेट्री से डेविएशन देखें तो इसमें 109.5 डिग्री से डेविएशन का जो मान है साइक्लोप्रोपेन में 49.5 डिग्री प्राप्त होता है, जबकि साइक्लोब्यूटेन में हमें 19.5 डिग्री का डेविएशन प्राप्त होता है. सो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन दोनों में ही बेयर के तनाव सिद्धांत के अनुसार डेविएशन होने के कारण उनमें तनाव पाया जाता है, जिसमें साइक्लोप्रोपेन में तनाव का मान साइक्लोब्यूटेन की तुलना में अधिक है. और यही कारण है कि ये दोनों ही कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं, जिनमें साइक्लोप्रोपेन में क्योंकि डेविएशन का मान अधिक है इसलिए वो अधिक स्थायी होगा, और यही कारण है कि ये दोनों यौगिक जो है एडिशन रिएक्शन हमें देते हैं. Now let us come to Beer strain theory again, which states that ring strain would increase on either increasing or decreasing the ring size, and hence it becomes unstable. So we found that this theory is correct in case of smaller cycloalkanes like cyclopropane and cyclobutane, but soon it was realized that it is not correct in case of larger cycloalkane. So what is the reason behind this? So we can understand this concept with the help of heat of combustion data. In the previous classes you have learned about the heat of combustion. Let us recall it again. So heat of combustion is a quantity of heat evolved when 1 mole of a compound is burned to carbon dioxide and water. In other words, the heat of combustion of a compound is the enthalpy change for the complete oxidation of the compound. So how this data can help us in getting the relative stability of cycloalkane. So this data provides us very valuable information about the relative stabilities of all organic compounds. Here, higher the heat of combustion means higher heat is evolving during the combustion of that compound, and higher heat evolved means higher the potential energy in this compound is having, and higher potential energy means the compound is less stable. So in bottom line we can say that higher the heat of combustion means lesser the stability. So let us take the data of heat of combustion for various cycloalkanes and get their relative stabilities. So this is heat of combustion and ring strain chart of cycloalkanes. Here the amount of heat evolved per CH2 unit is given. And if you see carefully that cyclohexane has the lowest heat of combustion per CH2 group, which is around 157.4 kilocalorie per mole. So we assume that cyclohexane is the most stable cycloalkane having no ring strain, and now we will compare the other cycloalkanes with this standard unit. So
As you can see, the other data like the data of cyclopropane, heat of combustion per CH2 group in cyclopropane is 9 kilocalorie higher than that of cyclohexane. And for cyclobutane also, you can notice that it is 7 kilocalorie per mole higher than cyclohexane. So these data of cyclopropane and cyclobutane shows agreement with Bayer's strength theory. That is, cyclopropane and cyclobutane are less stable than cyclopentane and cyclohexane, and that is why they undergo ring opening reactions. So here the Bayer strength theory verified. But what about the ring larger than cyclopentane and cyclohexane? According to this theory, they should also be unstable and also should have high heat of combustion and should be relatively unstable. And heat of combustion should increase with ring size. But here you can see that the exactly opposite result we have noticed. And if we see the other cycloalkanes, they possess ring strain of varying degree. The relative amount are not large. Cyclopentane and cycloheptane, you see the data of cyclopentane and cycloheptane have about the same modest amount of ring strain. And if we talk about the other rings of 8, 9 and 10 members, they have slightly larger amount of ring strain, and then the amount falls off. So the result is contrary to Bayer's theory. None of these rings is appreciably less stable than cyclohexane, and larger one are completely free from strain. So they also do not undergo the ring opening reaction. So here the Bayer strength theory is completely rejected for higher cycloalkanes. The cycloalkanes larger than 6 carbon, and the most stable form of cycloalkane is cyclohexane, not cyclopentane.